Assalamu alaikum. I am Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पे बात करेंगे विच इज़ फिनलैंड जॉइंड नेटो। नाज़रीन, 4 अप्रैल को कुछ दिन पहले फिनलैंड ने नेटो को ऑफिशियली ज्वाइन किया एज अ 31st मेंबर। नाज़रीन, नेटो के ऊपर तो हम अलग से बात करेंगे डिटेल से, बट यहाँ पे अगर मैं शॉर्टली बात करूँ तो नेटो इज़ बेसिकली अ कोल्ड वॉर military security alliance which was established by United States and its European allies, जिसको हम ट्रांस अटलांटिक अलाई भी कह सकते हैं। नाटो से बनता भी है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर यूएस और कनाडा के अलावा बाकी सारे मुल्क जो हैं वो यूरोप से हैं, इंक्लूडिंग टर्की। बिफोर फिनलैंड देयर वर 30 स्टेट्स दैट वर पार्ट ऑफ इट, और नेटो जो बनी थी दैट वाज इन 1949, और इसका जो बुनियादी पर्पज़ था दैट वाज द आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, सो दैट अगर इनमें से किसी एक मेंबर के ऊपर भी एक वॉर डिक्लेयर होगी तो दिस ऑर्गेनाइजेशन विल कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू दैट। हमने देखा कि कोल्ड वॉर में तो नेटो की कोई मेजर इंगेजमेंट नहीं हुई, लेकिन पोस्ट कोल्ड वॉर में यूएस इंगेज्ड नेटो इन मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग बोस्निया, कोसोवो, और फिर उसके बाद हमने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर भी। तो नेटो जो है इट हैज़ एस्टेब्लिश्ड एंड प्रूवन इट्स क्रेडेंस, it has proven its credibility, it has proven its efficiency in different conflicts. चाहे वो कोल्ड वॉर हो when it was not actively engaged but still it was having a major deterrence effect, या उसके बाद अब बहुत सारी different developments हो। अब नेटो का एक्सपेंड होना दैट हैज़ बीन टेकिंग प्लेस सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, 1990 से जो नेटो है वो उसकी एक्सपेंशन हो रही है, लेकिन उसी कॉन्टेक्स्ट में फिनलैंड का ज्वाइन करना इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। बट एक बड़ी रीज़न नाज़रीन उसकी ये है बिकॉज जो फिनलैंड है इट हैज़ हिस्टोरिकली यानी थ्रू आउट द कोल्ड वॉर एंड पोस्ट कोल्ड वॉर इट हैज़ मेंटेन्ड स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी अलॉन्ग विद स्वीडन। नाज़रीन, उसकी वजह यह है कि फिनलैंड बेसिकली बिफोर द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन केम इन रशिया, बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917, उससे पहले फिनलैंड वाज पार्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। जब ज़ार डायनेस्टी कोलैप्स की, एम्पायर वाज कोलैप्स इनटू अ सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो उस वक्त फिनलैंड बिकेम सेपरेट। और बट सिंस देन फिनलैंड जो था वो एक अंडर सोवियत इन्फ्लुएंस ज़रूर रहा। हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है यूएस और सोवियत यूनियन के दरमियान में नेटो बनता है, तो फिनलैंड जो है वो एक एग्रीमेंट साइन करता है सोवियत यूनियन के साथ, अंडर विच द सोवियत यूनियन had to guarantee from Finland that it would not join any Western or hostile alliance, NATO. In response, the Finland would be allowed to develop its own internal policies, चाहे वो political हो, economic हो या cultural policies हो. Socialism will not, try to interfere in the Finland's internal affairs. इस agreement को Finlandization कहते हैं because it actually kept Finland's internal structures, internal identity, and it was left to the people of Finland themselves. बट हमने देखा कि इस हवाले से अगर हम देखें तो कुछ अर्सा पहले तक, आज से 2 साल पहले तक, nobody thought that Finland would end its strategic neutrality along with Sweden and join NATO. But things changed, और जो फंडामेंटल रीज़न बना फिनलैंड को कंपेल करने का टू जॉइन नेटो, दैट वाज रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। लेकिन व्हेन रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, तो उस इन्वेजन के नतीजे में ऑब्वियसली फिनलैंड के अंदर और बाकी जो स्टेट्स हैं जिनका बॉर्डर लगता है रशिया के साथ, they actually felt a perception, the perception was developed in public, in the leadership, that the next target could be them. मोल्डोवा के अंदर यही fears हैं, पोलिश fears यही हैं, इस तरीके से बाल्टिक सी के अंदर जो स्टेट्स हैं ये वाली, इनके अंदर भी जो है वो डिफरेंट जो है वो थर्ड परसेप्शन डेवलप हुई। सो डिफरेंट सर्वेज मौजूद थे नाजरीन। बिफोर द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, only 1/3 of the people of Finland, they were willing to join NATO. But this number increased to 80% after Russia invaded Ukraine. ये जो significant transformation हुई है, हम कह सकते हैं that Finns felt more insecure when Russia invaded Ukraine, and that became a major opportunity for NATO to attract and join Finland in its own folds. लेकिन अब इसी के साथ साथ हमने देखा कि फिनलैंड के साथ स्वीडन आल्सो अप्लाइड फॉर द मेंबरशिप ऑफ नेटो, बट स्वीडन की जो मेंबरशिप है उसके अंदर जो है वो 2 मेजर स्टेट्स के ऑब्जेक्शंस हैं, एक है टर्की और दूसरा है चेक रिपब्लिक। लेकिन फिनलैंड की मेंबरशिप के ऊपर भी टर्की हैड ऑब्जेक्शंस, टर्की हैड बीन वीटोइंग इट फॉर सम टाइम नाउ, बट अल्टीमेटली हमने देखा कि फिनलैंड की जो गवर्नमेंट है इट हैज़ मेट विद द टर्किश ऑफिशियल्स, और अल्टीमेटली अ कंप्रोमाइज वाज मेड।
टर्किश अपोजिशन क्यों है इसकी नाज़रीन एक अलग डिबेट है, बट उसके अंदर जो मेन वजह हैं वो टर्की के हवाले से जो टर्की की जो कंसर्न्स हैं स्कैंडिनेवियन इन स्टेट्स के हवाले से, फिनलैंड और स्वीडन के हवाले से, वो ये थी कि जो टर्की के अंदर जो कुर्दिश एलिमेंट हैं, जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, वो सेंचुरी लेते हैं वहाँ पे जाके जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो फिनलैंड हो या चाहे स्वीडन हो। फिनलैंड के साथ तो कहीं ना कहीं हमें एग्रीमेंट नजर आता है, लेकिन स्वीडन के साथ फिलहाल कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। इट इज़ होप्ड दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर स्वीडन भी जो है वो ज्वाइन कर लेगा, तो उसकी एक्सपेंशन जो है वो अगेन एक डिफरेंट डिबेट हो जाएगी। लेट्स कम टू द पॉइंट नाज़रीन, इसकी ज्वाइनिंग करना, फिनलैंड का नेटो को ज्वाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इट्स इंपॉर्टेंट, वाई इट्स सिग्निफिकेंट, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। नाज़रीन सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस तो रशिया के लिए है। रशिया की जो नेटो स्टेट्स के साथ बाउंड्री है दैट इज़ डबल्ड आफ्टर फिनलैंड ज्वाइंड। नाज़रीन फिनलैंड की जो बाउंड्री है रशिया के साथ दैट इज़ 810 माइल्स, और अगर हम बाउंड्री को देखें तो ये जो इससे पहले नेटो स्टेट्स की बाउंड्री थी रशिया के साथ, जिसमें बाल्टिक स्टेट्स भी इन्वॉल्व हैं, लैटविया, लिथुआनिया वगैरह, तो वो बाउंड्री से ये मोर देन डबल हो गया। सो नाउ मोर देन 1600 माइल्स की जो बाउंड्री है नेटो की, वो रशिया के साथ बॉर्डर रखती है। तो इसका मतलब है जो नेटो के अंदर एक्सपेंशन है वो इम्पॉर्टेंट है, बट नेटो रशिया के बॉर्डर पे आ रही है, दैट बॉर्डर हैज़ डबल्ड। नाज़रीन रशिया यूक्रेन वार जब हुई तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिमांड ऑफ रशिया वाज दैट नेटो शुड नॉट कम ऑन इट्स बॉर्डर्स, यूक्रेन शुड नॉट ज्वाइन नेटो, दैट वाज द मोस्ट पिवटल फैक्टर दैट पुश रशिया टू इन्वेड यूक्रेन। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर फिनलैंड ने जब ज्वाइन किया नेटो को, दैट इट मीन्स दैट यूरोपियंस हैव नॉट बीन डेटर्ड बाय रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। और हमने देखा कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ डिटरेंस so that other states should not join NATO and especially the states that border with Russia, हमने देखा कि उसका exactly opposite होता है और opposite effect होता है, और रशिया के साथ जो नेटो की बाउंड्री है वो डबल हो जाती है when Finland joins, और obviously when Sweden joins this boundary will further expand। तो रशिया के हवाले से जो इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से इन्वेट किया गया यूक्रेन, दैट इनसिक्योरिटी इज़ लाइकली टू ग्रो एंड लाइकली टू इंटेंसिफाई। और हमने देखा उसके रिस्पांस में रशिया अनाउंस के जो ही नेटो जो है वो अपनी वेपन्स को, अपनी मिलिट्रीज़ को जो है वो फिनलैंड के अंदर शिफ्ट करेंगे, तो रशिया विल डिप्लॉय कॉरस्पॉन्डिंग मेजर्स, इट विल टेक कॉरस्पॉन्डिंग मेजर्स, और रशिया जो है वो अपनी फोर्सेस को जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया है जो बॉर्डर करते हैं फिनलैंड के साथ, वहाँ पे जाके रिलोकेट कर देंगे। तो रशियन कुड डिप्लॉय देयर मिसाइल्स, दे कुड डिप्लॉय देयर फोर्सेस एंड डिफरेंट आर्मामेंट्स। तो कहीं ना कहीं पे रशिया के लिए इनसिक्योरिटी जो है वो बड़ी है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। दूसरा नाजरीन जो कॉन्सिक्वेंस है वो यूरोप के ऊपर है। यूरोपियंस आर कॉन्फिडेंट दिस स्टेप ऑफ गिविंग फिनलैंड मेंबरशिप ऑफ नेटो शोज द डिप्लोमेटिक विक्ट्री ऑफ यूरोप ओवर रशिया इन यूरोपियन पॉलिटिक्स एंड इन यूरोपियन स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर नाजरीन कि जो यूरोपियंस हैं they wanted expansion of NATO towards Russian borders. They were unwilling to accept Russian demands that states should not join NATO. और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिनलैंड की डिज़ायर का अनाउंस करना, हिस्टोरिक यानी डेकेड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी को ख़त्म करके नेटो को ज्वाइन करना, दैट बोल्स्टर्स the European security and that bolsters European narrative, political narrative that it's a liberal order, European states are free to join any organization that they want to, and it actually has happened despite the threats of Russians जो कि हमने यूक्रेन के अंदर देख रहे हैं। तो यूरोपियंस के लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री हम इसको कह सकते हैं। तो यूरोपियंस विल बी मोर कॉन्फिडेंट इस हवाले से। थर्ड इम्पैक्ट नाजरीन जिसको हम IR में डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, बिकॉज आफ्टर फिनलैंड जॉइंट नेटो पॉसिबिलिटी ये है दैट अदर स्टेट्स माइट डू द सेम, और स्पेशली दो तीन मुल्कों के नाम लिए जाते हैं नाज़रीन। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मुल्क है दैट इज़ जॉर्जिया एंड सेकंड इज़ यूक्रेन। Although Georgia and Ukraine have shown their interest in joining NATO, but the formal process has yet not started, or even when the formal process starts, it will take a lot of time before the formalities could be met. So there's no short-term possibility of NATO expanding to Georgia and Ukraine, but this Finland join has rekindled the hope कि ये फ्यूचर में कहीं ना कहीं पे दोबारा एक्सपेंशन जो है वो हो सकती है, और जो यूरोप के अंदर जो नेटो की रोल है और इन्फ्लुएंस है वो बढ़ सकता है। So this could be the first drop in that idea that Finland became the first state that had defied the Russian deterrence, and that would embolden other states to do the same. एक domino effect आएगा, other states would also follow the suit.
एक और इम्पैक्ट नाज़रीन वो है नेटो की अपनी वर्किंग के ऊपर। बहुत सारी स्टेट्स कहती हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इस मेंबरशिप से नेटो पावरफुल होगी। दैट्स देयर इज़ नो फैक्ट बिकॉज फिनलैंड हैज़ इट्स ओन मिलिट्री, इट हैज़ इट्स ओन technology, it has its own geostrategic location that would significantly help NATO. But on the other hand, scholars are also skeptical कि एक और मेंबर ज्वाइन होने का मतलब है there is another vote in NATO and that also means there is another veto in NATO. हमने पहले भी देखा कि टर्की has been vetoing Finland's membership and Sweden's membership into NATO for months and months. Now another state has got membership, which means that another veto has been added to NATO. and क्योंकि NATO का प्रोसेस ऐसा है कि कंसेंसस के बगैर डिसीजंस करते नहीं, तो अगर एक और वीटो आ गई है इसका मतलब है नेटो को इंटरनल यूनिटी को मेंटेन करना उतना ही चैलेंजिंग हो जाएगा और उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। द मोर स्टेट्स ऐड टू नेटो इट मीन्स द मोर वीटोज ऐड टू नेटो। तो उस डाइवर्सिटी को, उन मल्टीपल स्टेट्स के नेशनल इंटरेस्ट को और कलेक्टिव इंटरेस्ट को अलाइन करना एक साथ, दैट वुड बिकम अ चैलेंजिंग टास्क फॉर नेटो एंड दोज हु आर पावरफुल विद इन नेटो, स्पेशली द यूनाइटेड स्टेट्स। एक और नाज़रीन कॉन्सिक्वेंस है और वो है बाल्टिक सी की पॉलिटिक्स की वजह से। नाज़रीन बाल्टिक सी जो है इट हैज़ प्रीडोमिनेटली बीन द रशियन डोमिनेंट रीजन। रशिया हैज़ बॉर्डर्स विद द बाल्टिक सी, लेकिन बाल्टिक सी के अंदर हमने देखा कि सवाए बाल्टिक सी स्टेट्स जो 3 हैं, जो लैटविया लिथुआनिया वाला है, उनके अलावा बाकी स्टेट्स जो हैं जो मेजर पावरफुल स्टेट्स हैं, दे हैव नॉट जॉइंड नेटो। बट व्हेन फिनलैंड जॉइंस इट एंड लेटेस्ट स्वीडन जॉइंस नेटो, तो हम कह सकते हैं बाल्टिक सी विच वॉज द रशियन डोमिनेटेड सी now will be separated from Russia and Baltic Sea would emerge as a NATO sea in that way. So एक regional जो shift है यूरोप के अंदर that is taking place, और Baltic Sea जो कि has never been under the NATO or the European influence, it is now turning into NATO's influence. इसकी नाज़रीन ना सिर्फ सिक्योरिटी implications हैं बल्कि इसकी एक economic implication भी है, जिससे हमने देखा कि Nord Stream 2 जो pipelines हैं, 2 pipelines हैं, Nord Stream 1 and Nord Stream 2, they pass under the Baltic Sea and that is very very significant. So it has a geo-economic value, it has a geostrategic value. Last but not the least नाज़रीन, बहुत important impact है यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी की वजह से। I think US has been engaged in the European continent since the end of the World War II. हमने ट्रूमन डॉक्ट्रिन के बाद देखा that United States is seriously involved, engaged not only in economic and political affairs but the security affairs of Europe. और NATO was one of the symbols of this US commitment to the security collaboration with the NATO, with Europeans. But नाज़रीन हम देखा कि इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे और उससे प्रेसिडेंट ओबामा थे, तो देयर हैज़ बीन अ मेजर डिबेट इन यूरोप एंड अमंग स्कॉलर्स अबाउट नेटोज रेलिवेंसी, especially for Americans, because American pivot has shifted from Europe to Asia. Or so much so that even Trump questioned, his argument was that NATO is an obsolete organization. और हमने देखा उसी हवाले से नेटो ने अपने टर्म पूरी होने से थोड़ा सा पहले he even announced the withdrawal of NATO forces from Germany. तो कहीं ना कहीं पे जो यूएस की कमिटमेंट है नेटो की वजह से, यूरोपियन सिक्योरिटी की वजह से, दैट वाज नॉट एज स्ट्रांग एज इट यूज्ड टू बी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड इवन इन 1990s. बट थैंक्स टू रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हमने देखा कि ये यूएस की जो कमिटमेंट है वो दोबारा इमर्ज होती है। और सेकंड फैक्टर जो यूएस को पुश करता है टुवर्ड्स यूरोप और नेटो, दैट इज़ द राइज ऑफ जो बाइडेन एज द प्रेसिडेंट। तो कहीं ना कहीं पे यूएस की जो ख्वाहिश थी अंडर प्रेसिडेंट बाइडेन एंड जनरली हिस्टोरिकली दैट नेटो शुड बी एक्सपेंडेड, और हमने देखा कि अमेरिकन हैव बीन मेजर फोर्स इन एक्सपेंशन ऑफ नेटो। तो उस हवाले से अगर हम बात करें तो अमेरिकन जो हैं दे विल बी वेरी हैप्पी to see NATO expanding and coming closer to the Russian borders, defying not only the Russian narrative of threat perception, but also what they call historical correction that has been done to the Europeans during the Cold War. And during the Cold War, Russia has, जो scholars कहते हैं, they had literally put a gun on Finland not to join NATO. Now that gun was no longer working. That gun deterrence is no longer effective on states, and that is considered to be a major paradigm shift that has a victory for the American strategic interest in the region. But क्या ये strategic gains lasting होंगे?
बिकॉज अब अमेरिका में अगले साल 2024 में दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं. ऑल्दो ट्रंप इज इंडाइटेड, बट दिस इंडाइटमेंट हैज़ मेड हिम मोर पावरफुल एंड मोर पॉपुलर अकॉर्डिंग टू मैनी सर्वेज. तो कहीं ना कहीं पे क्या इस हवाले से इफ़ ट्रंप कम्स बैक टू पावर इन यूनाइटेड स्टेट्स, क्या अमेरिकन जो कमिटमेंट है नेटो के साथ वो सेम रहेगी, या इवन एनी अदर रिपब्लिकन कम्स टू पावर ओवर देयर इन यूनाइटेड स्टेट्स, क्या ये कमिटमेंट वही रहेगी? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो ऐसे लगता है कि दिस इज़ अ बाईपार्टिजन काइंड ऑफ सपोर्ट, बट इन फ्यूचर इट विल डिपेंड अपॉन हु इज़ इन पावर इन द वाइट हाउस. तो कहीं ना कहीं पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं कि अमेरिकन हैव गेन्ड अ मेजर विक्ट्री, एंड दिस इज समथिंग दैट वुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन द अपकमिंग अमेरिकन इलेक्शंस एज वेल. टू कंक्लूड नाज़रीन, हम ये कह सकते हैं कि जो फिनलैंड की नेटो मेंबरशिप है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग नेटो फॉर डेकेड्स. And this will not only have repercussions for Europe, but this joining of membership will also have impacts across the world. और कहीं ना कहीं पे हम नाज़रीन हम देख सकते हैं कि जो डिटरेंस की क्रेडिबिलिटी है रशिया के वाले से, दैट वुड बी सिग्निफिकेंटली चैलेंज्ड. सो लेट्स सी हाउ रशिया reacts to that, and how Russia would ensure that its deterrence against European states and those states that join Russian borders, how Russia would use its deterrence capabilities to prevent them from moving and inching towards NATO's membership, especially with respect to Georgia and some of the other states. But obviously, Nazreen, this Finland's NATO membership has, on one hand, a point of joy for the Western allies, but at the same time, it is also alarming for other global powers like Russia and China. In this context, Nazreen, obviously, जो global politics है, उसके अंदर it is having a major steering effect as such. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.